तो चलिए शुरू करते हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 4 2022 for MIS. So let's go to the first question. Let's see what it is. We will try to complete it within 1 hour. Okay. With reference to the difference between criminal law and civil law, consider the following statements. क्रिमिनल और सिविल के बारे में पूछ रहा है. जब भी क्रिमिनल और सिविल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो क्रिमिनल को मर्डर को रिलेट कर लेना और सिविल लॉ को आप हाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ ये दोनों एग्जाम्पल को रिलेट कर लेना अगर कुछ भी ज़्यादा पता ना हो तो, और उसके ऊपर एलिमिनेशन कर सकते हैं हम दूसरे गिवन ऑप्शन से. तो चलो फिलहाल देखते हैं. लेट्स गो टू द फर्स्ट ऑप्शन. अंडर सिविल लॉ a complaint against an accused can only be filed by the government and never by an individual. सिविल लॉ ओनली गवर्नमेंट गलत है. एक्चुअली इसका जो ये द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय एनी एग्रीव्ड पार्टी, तो पहला वाला गलत है. एनी एग्रीव्ड पार्टी, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं. और लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन. द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज ऑलवेज लाइज ऑन द कंप्लेंटेंट, गलत है. मर्डर के टाइम पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द गवर्नमेंट. मतलब जब क्रिमिनल लॉ होता है तो वहां पे प्रूफ जो है गवर्नमेंट को साबित करना रहता है कि तुमने मर्डर किया है इसलिए तुमको ये सजा दी जाएगी, आईपीसी 324 एंड ऑल दैट. लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिविल लॉ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द कंप्लेंटेंट. उस टाइम पे जब सिविल लॉ चल रहा है तो गवर्नमेंट को प्रूफ नहीं करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स इसने साइन किया है कि नहीं है वगैरह. उस टाइम पे कंप्लेंटेंट जो कंप्लेंट किया रहता है उसको खुद प्रूव करना रहता है. अगर कुछ धांधलेबाजी उसने की है तो उसने वो धांधलेबाजी नहीं किया है बोल के उसको खुद बताना पड़ता है. तो ये भी गलत है. बर्डन ऑफ क्रिमिनल लॉ पे गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ. सिविल लॉ पे द कंप्लेंटेंट हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ. वो अभी थोड़ा विवाद भी चल रहा था ना ये बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके, वो लव जिहाद के इश्यू में थोड़े स्टेट्स में वगैरह. तो चलो लेट्स नॉट गो देयर. लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स consider the following statements. The President of India can appoint the judge of a high court as the ad hoc judge of a Supreme Court. एक सेकेंड, प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस. अब चीफ जस्टिस करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. He can appoint the judge of a high court as an ad hoc judge of a Supreme Court. मतलब हाँ. Let's go to the second option. The Chief Justice of India can appoint duly qualified persons as additional judges of High Court. उल्टा दे दिया है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आता है. President can appoint duly qualified persons as additional judges of a High Court, not the Chief Justice of India. और एट द मैक्स ये जो एडिशनल जजेस है जो हाई कोर्ट के लिए काम करते हैं, ये एडहॉक जजेस, इनका मैक्सिमम कार्यकाल मतलब मैक्सिमम ये 2 साल तक काम कर सकते हैं. तो चलो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. इसका तो आंसर क्या हुआ, दोनों गलत है ना, तो आंसर इसका डी हो जाएगा. ओके लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन. इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय. दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर्स के हिसाब से पूछ रहा है और वो दिया है आर्टिकल 50 wherein it states that the state shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the state. तो आर्टिकल 50 किस में आता है, डीपीएसपी में. सिंपल क्वेश्चन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Consider the following statements regarding the Supreme Court of India. The Constitution authorizes the President to appoint places other than Delhi as the seat of Supreme Court. नहीं यार, प्रेसिडेंट को क्यों बीच में लाते हो. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डू दैट, नॉट द प्रेसिडेंट. ही कैन टेक द डिसीजंस. हाँ, अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का,
मतलब president's approval is required, but the president himself alone cannot appoint places other than Delhi as the seat of Supreme Court. It has to be done by the Chief Justice of India. पहला वाला गलत है. Option. Let's go to the second option. The constitutional cases or references made by the President under Article 143 are decided by a bench consisting of at least 5 judges. Yes, at least 5 judges. ये आंसर सही है. आर्टिकल 123 का जो भी केसेस आता है वो 5 जजेस में डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और दैट विल बी अ ओपन कोर्ट. सो इट इज ट्रू. और वैसे 143 आर्टिकल क्या है? एनी लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो पता चल जाएगा. दो तो सही है. लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन. ऑल प्रोसीडिंग्स ओके इन द सुप्रीम कोर्ट शुड बी इन इंग्लिश. हाँ, मतलब अब तक जहां तक हम देखे हैं सभी के सभी प्रोसीडिंग्स जो जो है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही है. बट पेटिशंस कैन बी अलाउड जेनरिक स्टेटमेंट है. देखते हैं. इन हिंदी अलोंग विथ इंग्लिश. एक्चुअली यहाँ पे पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन ऑफ हिंदी. पार्लियामेंट हिंदी का प्रोविजन नहीं किया है. यार सुप्रीम कोर्ट है, मल्टी लैंग्वेजेस लैंग्वेज है, हिंदी को इम्पोज करने से सदर्न स्टेट भी थोड़ा विरोध करेंगे, तो इट हैज नॉट मेड इट. सो थर्ड वन इज ऑल्सो फॉल्स. आंसर इज ओनली टू, मतलब ऑप्शन सी. लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. With reference to the writ jurisdiction of Supreme Court and of High Court, okay, Supreme Court और High Court 32 और 226 दोनों के बारे में पूछ रहा है. Which of the following is or are correct? Sorry, excuse me. Only the writ jurisdiction of Supreme Court and not that of a High Court is a part of the basic structure of the Constitution. गलत है. Writ jurisdiction of both Supreme Court and High Court. क्या हाई कोर्ट का writ jurisdiction का वैल्यू ही नहीं है क्या? Both are basic structure, मतलब both are the basic part of the basic structure of the Constitution. तो पहला वाला गलत है. And second one, unlike High Courts, the Supreme Court cannot issue writs for the purpose other than the enforcement of fundamental rights. That is true. Actually, High Court का जो writ jurisdiction है, that is far much wider. Supreme Court का it's just fundamental rights. उसी के लिए writ निकाल सकते हैं, लेकिन High Court का writ पड़ा है, तो that is true. तो इसका आंसर 2 होता है. एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं with regarding the first option, चंद्रा कुमार केस इन 1997, यहाँ पे बताता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताता है कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आंसर इसका ओनली 2 है. लेट्स बी. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंपल ऑप्शन है. कस्टोडियन, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 में दिया है. चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. With reference to special leave petition, special with reference to special leave petition, which of the following statements is or are correct? It can be claimed as a matter of right. Right? Special leave petition को right पूछ रहा नहीं. By an individual against any judgment of a high court. Actually, this is not a matter of right. It is a discretionary power ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उसके ओन डिस्क्रिशन से निकालते हैं. स्पेशल लीव पिटिशन का कोई राइट नहीं है इंडिविजुअल को स्पेशल लीव पिटिशन मिलना ही है बोल के. तो पहला वाला गलत है. लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन. इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ एनी ट्रिब्यूनल ऑफ और कोर्ट. ये भी गलत है. एनी ट्रिब्यूनल कैसे? कोर्ट मार्शल वगैरह तो मतलब रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस वगैरह ट्रिब्यूनल्स का यहाँ पे स्पेशल लीव पिटिशन नहीं चलता है. तो 2 इज ऑल्सो गलत. दूसरा भी गलत है, वो तो गलत ही होगा. बचे 3 और 4. थर्ड ऑप्शन, एनी सच अपील requires a certificate of fitness from the High Court.
ये हाई कोर्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अब अगर हाई कोर्ट में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट को जा रहा है और मतलब हाई कोर्ट में अच्छा डिसीजन नहीं मिला है तो जा रहा है, तो ऑफ कोर्स हाई कोर्ट तो फिटनेस का सर्टिफिकेट तब देगा नहीं ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं चाहिए। एग्रीड पार्टी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 बाय फाइलिंग अ स्पेशल लीव पिटिशन। याद रखना है जब when this is involved, article 136 special leave petition to supreme court directly without the fitness of high court, when there is a substantial question of law, लॉ में ही कुछ गड़बड़ है, इन अ मैटर वेयर ग्रोस इनजस्टिस हैज बीन डन, लॉ में जब गड़बड़ होता है तब ही जा सकते हैं स्पेशल लीव पिटिशन को बिना हाई कोर्ट का ये दिए, अंडर आर्टिकल 136। तो थर्ड इज ऑल्सो गलत है, बचा फोर्थ। इट कैन बी फाइल्ड इन केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल या कोर्ट मार्शियल का जो है, मिलिट्री का छोड़ के बाकी सब तरफ, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लॉ के हिसाब से इट कैन बी फाइल्ड। तो चलो, आंसर इज सी। लेट्स गो टू द 8th क्वेश्चन। With reference to appellate jurisdiction of Supreme Court, with reference to appellate jurisdiction of the Supreme Court, which of the following statements are incorrect? All right. तो पहला वाला पूछ रहा है कि certification of High Court is not necessary to appeal in any civil case but is required in criminal cases. गलत है। Certification of High Court is necessary in civil cases. It is necessary, उल्टा दिया है। It is necessary in civil cases. तो पहला वाला तो सरासर गलत हो जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल केसेस, जब वो अभी लाइक अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट में या यहाँ पे लोअर कोर्ट में उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिए हैं ऑलरेडी, और उसको अभी ये इनजस्टिस लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये क्रिमिनल मैटर में कैपिटल पनिशमेंट देंगे। तो सिविल में तो सर्टिफिकेशन जरूरी है, अभी सिविल की बात नहीं हो रही है, क्रिमिनल की बात हो रही है। तो जब क्रिमिनल की बात हो रही है और उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया है, तो ही वांट्स जस्टिस टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। एट दैट टाइम हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है। ओके, तो बट बस in any case which fits for appeal of the Supreme Court where he wants justice, so at that time he can go to Supreme Court. तो पहला वाला तो पहले ये तो गलत है। सो हाई कोर्ट का विथ रेस्पेक्ट टू सिविल केसेस इज नेसेसरी, with certification of high court is necessary, but in criminal cases it depends on case to case basis. So let's go to the second option. The money, only those civil cases which can be appealed before the Supreme Court which exceed a certain monetary limit. एक्चुअली ये पहले, मतलब अगर 1972 के पहले अगर यूपीएससी एग्जाम देते थे और ये क्वेश्चन पूछता था तो सही होता था, लेकिन अभी फिलहाल गलत है। 1972 के पहले जो होता था कि 20,000 रुपीज का जो है, जब वहां का मॉनेटरी लिमिट का ही मतलब एग्जिस्ट करता था सिविल केसेस को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, और 1972 में ये जो मॉनेटरी लिमिट है निकाल दिया। मॉनेटरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, जितना भी पैसा हो अगर नाइंसाफ हुआ है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, बस 20,000 के ऊपर ही हुआ है तो ही जाना है बोल के नहीं है। ओके, तो दूसरा वाला भी गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। अरे पूछा है इनकरेक्ट ना, वो भी तो पढ़ना है। तो 1 और 2, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ओनली दोज, फिर से, criminal cases which can be appealed before the Supreme Court that involve death sentence. Only those criminal cases can be appealed before the Supreme Court that involve death sentence. सिर्फ डेथ सेंटेंस ही नहीं, सोचो कि डेथ सेंटेंस के सिवा और भी कोई रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया है या 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया है तो भी
मतलब 10 years का इम्प्रिजनमेंट है तो भी वो भी बड़ा ही है, बड़ा बड़ा गुना होता है। तो या मतलब डेथ सेंटेंस नहीं दिया है, लोअर कोर्ट 10 साल का दे दिया है और हम आगे जा ही नहीं सकते, वैसा बात बनता ही नहीं है। तो ये भी गलत है। आंसर इज 1, 2 and 3, ऑप्शन डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ओके, तो पहला वाला बोलता है, एक सेकेंड, ग्राम न्यायालय एक्ट, पहला वाला बोलता है एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालयास कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। नहीं, ग्राम न्यायालय एक्ट कैन हियर सिविल केसेस, कैन हियर क्रिमिनल केसेस एंड ऑल्सो सूट्स, डिस्प्यूट्स, क्लेम्स। हमारा प्रॉपर्टी इतना है, बड़े भैया को इतना चाहिए, छोटे भैया को इतना चाहिए वगैरह सब सुनता है ग्राम न्यायालय। तो पहला वाला गलत है, इट listens to every case. And second, the act allows the local and social activists as mediators and reconciliators. This is true. Or this Gram Nyalaya Act is not bound by the CRPC. मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 जो है, ग्राम न्यायालय इज नॉट बाउंड बाय दिस, इट इज नॉट बाउंड टू फॉलो दिस। तो ये याद रखना चाहिए। इट इज जस्ट गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ग्राम न्यायालय वाला। तो आंसर इसका कौन सा होता है? ओनली 2। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो the judgments, proceedings and acts of the Supreme Court cannot be questioned when produced before any subordinate court। हाँ सही है। अब सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और यहाँ पे कोई उसके बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, तो क्या हर टाइम ऊपर नीचे करते बैठेंगे क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को पूछो। नहीं, यहाँ पे लोअर कोर्ट में नहीं पूछना है। पहला वाला सही है। दूसरा वाला, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द लोअर कोर्ट्स। यस इट हैज। इसीलिए तो इट इज अ सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इट हैज ऑल द पावर टू पनिश दैट। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, इट्स बोथ 1 and 2। सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ ऑल लोअर कोर्ट्स ही नहीं, इवन ट्रिब्यूनल्स, उसका कंटेम्प्ट भी सुप्रीम कोर्ट कैन हैव द पावर टू पनिश। अगर ट्रिब्यूनल का भी कोई कंटेम्प्ट किए तो यस इट कैन डू दैट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विथ रेफरेंस which of the following is or are regarded as criminal contempt of court? क्रिमिनल कंटेम्प्ट पूछा है, सिविल कंटेम्प्ट नहीं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज जब कोई जस्टिस डिलीवर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और उसमें बाधा बन के रुक गए, तो इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है और दिस पर्सन इज विलफुली or not unconsciously, both of them, but he is not following it, at that time ये सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जस्टिस को, at that time it is a criminal contempt। तो चलो लेट्स गो टू द फर्स्ट ऑप्शन। when judicial acts are criticized in a newspaper even in fair and reasonable way। यार फेयर एंड रीजनेबल वे तो इट मतलब क्वेश्चन में ही दिया है, इट डज नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। Second, an act which interferes with due course of judicial proceeding। Yes, of course, अभी तो डिस्कस किया, that is what amounts to criminal contempt। Next, देखते हैं, commenting on the administrative side of the judiciary। यार एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशियरी, हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है। हाँ, डिग्रेडिंग नहीं करना है, डिग्रेड नहीं करना है जुडिशियरी को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशियरी में कमेंट जरूर कर सकते हैं। दैट डज नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्कशन ऑफ मैटर्स ऑफ कोर्ट, दैट आल्सो डज नॉट। यार वर्डिंग में ही देख लो ना, इनोसेंट पब्लिकेशन, इसमें थोड़ी कंटेम्प्ट लग जाएगा। फोर्थ वाला विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट ऑफ अ कोर्ट, ये जो विलफुल डिसोबीडियंस है ये सिविल सिविल कंटेम्प्ट बनता है, ना कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट। पूछा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो सिर्फ टू is the option B. चलो, let's the 12th question. In India, judicial review implies the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. सही लग रहा है, ऑलमोस्ट सही है। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। The power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. विजडम को जुडिशियल रिव्यू नहीं करता है, नहीं कहलाते हैं, सॉरी, तो दूसरा तो गलत है। थर्ड ऑप्शन जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, गलत है। प्रेसिडेंट जब पास करता है बाद में करने का उसका पूरा हक बन जाता है। पहले अगर कोई पहले ही अभी लेजिस्लेटिव का प्रोसेस ही है और ये होना है, तो मतलब पहले अभी तक पास ही नहीं हुआ है, तो जुडिशियरी कैसे उसको जुडिशियल रिव्यू करने बैठ जाएगा? पहले पास तो होने दो, इसलिए तो लेट होता है हमारे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन अ सिमिलर और अ डिफरेंट केस, यस, बट इट इज नॉट जुडिशियल रिव्यू। ओन रिव्यू है ये, एक्चुअली करेक्ट है। दिस कैन डू, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, बट जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये नहीं है। तो चलो लेट्स गो टू द 13th, इसका आंसर बन गया ए, 12th ए। लेट्स गो टू द 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी बोले तो अब क्या है बोल के पूछ रहा है। लेट्स गो टू द फर्स्ट ऑप्शन। When a law is inconsistent with the fundamental right, then the law become dormant but can't be striked down and can't be revived later. गलत है ये। It can be striked down if it is inconsistent with the fundamental right. तो ये तो गलत है। Second option, when a provision is inconsistent with the fundamental right, then the whole law becomes dormant. Whole नहीं, just a part of the law becomes dormant. मतलब पूरा पार्ट है, यहाँ पे कोई लॉ ये फॉलो नहीं करता है फंडामेंटल राइट को, मतलब ये पूरा अगेंस्ट है, तो इस पार्ट को निकालेंगे, ना कि पूरा का पूरा ये पार्ट को निकाल देंगे। दूसरा वाला भी गलत है। When a provision is inconsistent with the fundamental right, the whole statute containing the provision becomes null and void. सेम यही बात कर रहा है, दोनों ये भी गलत है। When the provision is inconsistent with the fundamental right, all right, फिर से provision inconsistent with the fundamental right, instead of removing the whole statute, only the inconsistent becomes void. हाँ, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट इट इज। सिर्फ वो पार्ट निकाला जाएगा, ना कि पूरा का पूरा लॉ। तो दैट्स आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, आंसर डी। लेट्स गो टू द 14th ऑप्शन, 14th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यार बैलेंस ऑफ पावर और जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रेंट मतलब अपने दायरे में रहो, ज्यादा दादागिरी वगैरह मत दिखाओ, नॉर्मल हिंदी भाषा में अगर सोचे तो। और जुडिशियल रिस्ट्रेंट मतलब अब जज है, उसको मतलब हर टाइम सारा का सारा ये बोल कि मैं जज हूँ बोल के ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, हर टाइम को नल सभी को ये गलत है, ये गलत है बोल के बोलने का थोड़ा कम कीजिए आप, बोल के इनडायरेक्टली बोल रहा है। दैट्स व्हाट जुडिशियल रेस्ट्रेंट मींस, वैसे सोच लो। तो अगर वैसा सोचा जाए, मतलब क्वेश्चन के लिए जब भी मैं बोलता हूँ कि वैसे सोच लो, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ना कि पूरा का पूरा मतलब मेंस के हिसाब से भी नहीं। ओके, तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला, इट वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, ये कैसे? पूरा मतलब जब भी जुडिशियरी फील्स इट इज मतलब
it is really a matter of public importance, it will say against it. It is not that it violates the independence of the judiciary. Judiciary is independent. तो ये भी गलत है. Let's go to the third option. It recognizes the equality of other two branches with the judiciary. हाँ, ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये अपने आप का काम कर रहे हैं, तो एक काम करने के काम कर को अगर ऑब्स्ट्रक्ट किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो तीसरा वाला एक्चुअली सही बता रहा है. दिस इज व्हाई द जुडिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट हैज कम. तो इट इज जस्ट आंसर 3, ऑप्शन बी for 14th question. Let's go to the 15th one. With reference to the Constitution of India, consider the following statements. All right. No high court have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. This is actually wrong. High court can have the jurisdiction to declare any central law to be invalid. हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाए और हाई कोर्ट उसको गलत माने. इट हैज दैट पावर. तो पहला वाला गलत है. For second, an amendment to the constitution cannot be called into question by the Supreme Court of India. ये का है. बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल पूछा है. ऑप्शन डी है, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. Constitutional amendment can be challenged in a court of law. Chalo, let's go to question number 16. Consider the following statements regarding the High Courts of India. The Constitution of India provides for the establishment of a common High Court for 2 or more states. Actually, this is correct. मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे नहीं, लेकिन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 जो है, दिस states that there can be a common high court for 2 or more states or a union territory, both of them. And coming on to the second option, the territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of the concerned state. That is also correct. मद्रास का है तो तमिलनाडु का टेरिटोरी आ जाएगा, केरला का है तो केरला का आ जाएगा. तो that's true. मुंबई का है तो महाराष्ट्र का आएगा. It is true. तो option is both B and both 1 and 2. Let's go to question number 17. With regard to qualifications needed to become a judge of a high court, which of the following statements are correct? Qualifications to become a judge of a high court. Qualifications to become a judge of a high court is that he should have hold and मतलब he should have been a judge in the district court for at least 10 years. ये सही है. Or he should have minimum 10 years of practice as an advocate of high court, which is option 1. That is true. दोनों सेम ही बताता है almost. And he should be an eminent jurist in the opinion of the president, that is option number 2 is गलत है. ये eminent jurist का जो option है, ये qualifications for a judge of a supreme court, लेकिन for high court this is not the case. तो 1 2 3 में 2 गलत है. अगर 2 गलत हो गया, 1 और 3 सही है, तो आंसर इज 1 and 3, that is D. तो चलो, let's go to question number 18. Consider the following statements. The 44th constitutional amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of prime minister beyond judicial review. अगर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी. और वो भी कहे कि 44th में, 44th मतलब इमरजेंसी के बाद वाला, गलत है. हुआ तो 42nd में हो सकता है, 44th में नहीं. तो दिस इज straight away wrong. Second option, the Supreme Court of India struck down the 99th amendment of Constitution of India being quality of the independence of judiciary. NJAC. Of course, that is correct. National Judicial Appointment Commission जो
बताता था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली इनका पावर थोड़ा सा जुडिशियरी के ऊपर भारी पड़ जाएगा, तो दिस वाज स्टक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज फाइट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब गलत स्टेटमेंट जो है, मतलब स्टेटमेंट सही है, ये हुआ है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन। तो आंसर इज बी, 18th। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19। With reference to the transfer of high court judges, which of the following statements is or are correct? The president only, only आ रहा है, only after the consultation with the governor of the respective state can transfer a judge of one high court to another in public interest. ये प्रेसिडेंट जो है, इट इज नॉट विद द कंसल्टेशन ऑफ अ गवर्नर। गवर्नर का क्या रोल होगा यार? नहीं, प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि दो स्टेट का बात हो रहा है ना यहाँ पे, यूनियन में यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन करना है जहाँ जब ट्रांसफर करना होता है। तो ये गलत है पहला वाला। और व्हेन इट कम्स टू द सेकंड वन, the transfer of judges is not subject to judicial review and hence cannot be challenged in a court, ये भी गलत है यार। एक्चुअली इट, ये जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है, दिस कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, मतलब ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। बट व्हाट इज द कैच? ये जो ट्रांसफर ऑफ जजेस, मतलब जब हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जाता है, तो एग्रीव्ड पार्टी, कोई दूसरा पार्टी नहीं बता सकता कि जुडिशियल रिव्यू करो। ये जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जो जज है, सिर्फ वो ही बता सकता है कि ये गलत हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू करो इस पे बोल के। 1994 में ये कहा जाता है, तो ये थोड़ा है इसमें। तो 19th वाला में neither one nor two. Let's go to question number 20. With respect to the supervisory jurisdictions of the High Court, supervisory jurisdictions, consider the following statements. The power of superintendence of High Court extends over all courts except military and tribunals in its territorial jurisdiction. हाँ सही है, सिंपल स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। लेट्स गो। तो और ये चारों में ए दिया है। अगर यूजुअली जब वैसा फिलहाल देते नहीं है, लेकिन अगर दे दिए मेन एग्जाम में तो टाइम बचा लो, ये रीड करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो, लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन। The jurisdiction, however, comes only on the application of a party and cannot be taken on its own। नहीं यार, हाई कोर्ट के पास सुमोटो पावर से, सुमोटो प्रोविजन से सुपरविजन के लिए, तो दैट इज कल, मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है। और थर्ड, द हाई कोर्ट डील्स विद अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑफ ऑल जजेस विद इन द स्टेट। हाई कोर्ट डील्स विद अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑफ ऑल जजेस, ये भी गलत है। मतलब गवर्नर को कंसल्टेट करना है, वो सब होता है ना। और जुडिशियल स्टेट का सर, मतलब प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर्स वगैरह, ये सब जुडिशियल सर्विस करते हैं, जैसे यूपीएससी वैसे जुडिशियल सर्विस का वगैरह होता है, तो वो ये भी गलत है। आंसर इसका सिर्फ ये है, सिंपल। हाई कोर्ट डील्स विद अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसफर वगैरह हाई कोर्ट थोड़ी डील करता है। अब ये यहाँ पे अगर एक जज को वगैरह ट्रांसफर करना है तो कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होते हैं। फिर सिर्फ हाई कोर्ट अपने आप कर सकता है? नहीं। चलो, हाँ, ये वैसे ये पूछ रहा है कि विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट होने पर भी दिस इज कंसल्टेड, आई मीन मतलब विद इन द स्टेट हो तो ये गवर्नर को तो कंसल्ट करना ही है इनको। तो अपने आप थोड़ी कर सकते, अपने आप थोड़ी करना है, पूरा का पूरा भी पावर नहीं देंगे यार, थोड़ा तो पावर, मतलब ऑफिशियली तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को भी साथ लेके ही जाना है, वैसे समझ लो। चलो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 21।
The motion to impeach a judge of a Supreme Court, motion to impeach a judge of a Supreme Court cannot be rejected by the speaker. अरे it can be rejected. पहला वाला गलत हो गया. Simple. It can be rejected. Second option देखते हैं. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court. Constitution नहीं बताता. It doesn't define कि ये proved misbehavior और incapacity है बोल के नहीं बताता है. चलो let's go to the third option. The process of impeachment of a judges of the Supreme Court is given in the Judges Enquiry Act of 1968. This is actually true. Judges Enquiry Act of 1968 procedure बताता है कैसे judge of a Supreme Court can be removed. Or fourth option, if a motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and not supported by a majority of total membership of the house and not less than two-thirds of the total membership of the house present and voting. This is actually correct. अभी टू-थर्ड दोनों हाउस में चाहिए, मतलब लोकसभा हो राज्यसभा हो तो ही वो इम्पीच होता है और उसको जाने के लिए मोशन जो करना होता है वो मोशन को 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू द रेस्पेक्टिव चेयरमैन हु हैज हिज डिस्क्रिशन कि एक्सेप्ट करना है या नहीं और करने के बाद सीजीआई को कंसल्ट करके एक कमेटी बना के वो कमेटी का रूलिंग आने के बाद यहाँ पे वोटिंग होता है एंड इफ इट इज पास्ड बाय दिस मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी देन ही इज नो लॉन्गर द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द प्रोसेस. चलो let's go to the next question. Question number 22. Which of the following statements with reference to the role of Indian judiciary as the protector of fundamental rights is correct? The Constitution has explicitly the Constitution has explicitly endowed the power of judicial review on the judiciary. नहीं, Constitution नहीं, ये केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप को जुडिशियल रिव्यू का दर्जा दिया था. तो ये गलत, पहला वाला गलत है. द जुडिशियरी इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोहिबिट्स एनी अमेंडमेंट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, ये भी गलत है. पार्ट 3 कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते. और थर्ड वाला रूलिंग ऑन फंडामेंटल राइट्स इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. रूलिंग ऑन फंडामेंटल राइट्स इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. यस ऑफ कोर्स, अभी फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो उसको रूलिंग करने का जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट के पास ही, ना कि कोई छोटे लोअर कोर्ट्स के पास जाते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट. दिस इज सिंपल स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड स्टेटमेंट. लेट्स गो टू द फोर्थ ऑप्शन. द रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट is limited only to the laws passed by the parliament. नहीं यार, review power of Supreme Court is not just limited to the laws passed by the parliament. Even state legislature से laws pass हो जाए या कोई दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का लॉ पास हो जाए, that can also be reviewed. तो ये भी गलत है. चलो let's go to question number 23. यहाँ पे पूछ रहा है consider the following place with reference to union territories and high courts they come under. Okay, union territory और high court का पूछ रहा है. लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी एक्चुअली कम्स अंडर द हाई कोर्ट ऑफ केरला और पुडुचेरी कम्स अंडर मद्रास. नॉट, पुडुचेरी का सेपरेट नहीं है. अंडमान एंड निकोबार जो है वो कोलकाता में आता है ना. कोलकाता हाई कोर्ट में अंडमान एंड निकोबार का जुरिस्डिक्शन मतलब कोलकाता का हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के अंदर अंडमान एंड निकोबार आता है, मद्रास का नहीं. और दादर एंड नागर हवेली, यस दिस फोर्थ वन इज करेक्ट, ये बॉम्बे पे आता है. तो आंसर इज जस्ट सेकंड ऑप्शन. चलो लेट्स गो टू द 24th क्वेश्चन. Consider the following statements. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy.
ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को। 1973 केशवानंद विवर्ती केस में होता है, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक स्ट्रक्चर है बोलने के लिए आगे भी क्या हो सकता है बोल के सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया है, पहला वाला गलत है। और कमिंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, यस, टू सेफगार्ड द सिटीजन्स liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based. Yes, simple general straightforward statement है। That is why article 32 and article 226 is there for the judicial review। तो आंसर इसका हो गया सिर्फ 24th। Let's go to 25th question with reference to tribunals in India। ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछ रहा है। The 44th Constitutional Amendment Act added a new part 11A to the Constitution entitled as tribunals। ट्रिब्यूनल्स एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में, मतलब बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो रहा है तो ट्रिब्यूनल्स का स्थापना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस वगैरह किस टाइम पे हो रहा था? इमरजेंसी के टाइम पे। और इमरजेंसी कब था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ना कि 44th। तो पहला वाला तो गलत है। अगर पहला वाला गलत हुआ तो बचे 2 3 4 2, मतलब दो वाला तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। व्हाट इज इट? द नीड फॉर ट्रिब्यूनल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एक्सपर्ट्स शुड ब्रिंग स्पेशल नॉलेज टू जस्टिस डिलीवरी। हाँ, उस उस फील्ड के नॉलेज को, मतलब दे विल बी देयर। तो दिस इज ट्रू। कमिंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, the Central Administrative Tribunal (CAT) is guided by the principles of natural justice and hence bound by Civil Procedure Code of 1908, which is सरासर गलत है। It is not bound by Civil Procedure Code of 1908। पार्लियामेंट यार इमरजेंसी है, अब सीआर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 फॉलो करते बैठेंगे क्या? वैसे भी फिलहाल इट जस्ट ये समझ लेना कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कैट है, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज ट्रू, बट इट इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर सीआर 1908। और फोर्थ ऑप्शन, एन एग्रीव्ड सिविल सर्वेंट कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट। दिस ऑप्शन 1997 के पहले हो सकता था, लेकिन 1997 के बाद इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब चंद्रा कुमार केस में बताते हैं कि अभी फिलहाल एग्रीव्ड सिविल सर्वेंट हैज टू अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट एंड देन, मतलब अगर सीएटी में कुछ प्रॉब्लम है तो ही हैज टू अप्रोच द हाई कोर्ट, नॉट डायरेक्टली द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी आंसर गलत है। ये भी आंसर गलत है, सिर्फ ऑप्शन 2, आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 26, विथ रेफरेंस टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एसएटी। अभी अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में देखिए, अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट। यस, इट कैन बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। अगर कोई स्टेट बोलता है कि हमें एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करके दीजिए गवर्नमेंट सेंटर, तो सेंटर कैन। So that is true. Coming on to the second option, the chairman of SAT is appointed by the president in consultation with the chief justice of high court of that state। ये गलत है। This chairman of state administrative tribunal is appointed by the president is true, but in consultation with the governor, not the chief justice। And this appointed state administrative tribunal का टर्म चेयरमैन जो है 5 years है और 68 years, 5 years और 68 years, विच एवर इज मिनिमम। और फिर
65 के आगे अगर कोई है, 65 ईयर्स हो गया है, तो उसको एसएटी का मेंबर नहीं बनाएंगे। तो चलो इसको टू द वन गलत है, टू गलत, दो गलत है, वन सही है। ऑप्शन तो आ ही गया ना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू पनिश एन इंडिविजुअल फॉर इट्स कंटेम्प्ट। जेनेरिक स्टेटमेंट, दैट इज करेक्ट। तो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27। In India, legal services authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? This is actually asked in UPSC once, 2019 में I think. So a person with an annual income of less than 1 lakh is actually true. वैसे अगर कुछ पता नहीं है और हमको बस गेस करना है इस टाइम पे, तो बस ये देख लेना कि ऑल सीनियर सिटीजन्स दिया है फोर्थ ऑप्शन में। सब सीनियर सिटीजन्स, बहुत सारे रिच सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अनिल अंबानी का पापा, नहीं अंबानी का छोड़ दो, कोई हाँ सोचो रतन टाटा ही है। रतन टाटा को जरूरत नहीं है ना लीगल नेशनल सर्विस, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटीज का, कि फ्री लीगल सर्विस ही चाहिए। वो तो बहुत अच्छे अच्छे झुनझुन वाला मतलब सॉरी, रतन टाटा जो रिच है वो चाहे तो कोई दूसरा बड़ा अमीर लॉयर भी ले सकते हैं। तो ऑल सीनियर सिटीजन्स गलत हो जाएगा, और अगर फोर गलत हो गया ना तो बच गया 2 3 1 3। और 2 3 और 1 3 में वन तो मतलब टू तो कॉमन है, जो ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, दैट इज ट्रू। इफ दैट इज ट्रू तो ओबीसी को क्यों 3 लाख का होता है और पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ये तो दोनों मिसमैच हो जाएगा। जो लोअर होगा वो सही होगा, ओबीसी को क्यों ज्यादा दिएंगे, ज्यादा पैसा देंगे। तो उस हिसाब से पहला वाला भी सही हो जाएगा। तो पहला वाला और दूसरा वाला वैसे हम आंसर पे लेके आ सकते हैं। वैसे दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द फ्री लीगल एड जो है, दिस इज अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नॉट ओबीसी। ओबीसी को फ्री लीगल एड नहीं है, दैट इज थिंग विच वी नीड टू नो। तो चलो लेट्स गो। और सीनियर सिटीजन का भी जो है, ही ऑल्सो, इनका भी इनकम लिमिट है। सीनियर सिटीजन का 2 लाख, 2 लाख के अंदर कोई कमा रहा है तो उसको फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28। With reference to the Article 323, with reference to Article 323B of the Constitution, consider the following statements. Article 323B. So the first option says it gives power to state legislature to establish tribunals for adjudication of industrial disputes. That is correct. Article 323B, मतलब it actually gives the power to the state to establish tribunals industrial dispute के लिए. So one is correct. और second option, the article deals only with public service matters. अरे यार, टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कस्टम्स होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होता है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए आर्टिकल 31 का होता है, अर्बन प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, मतलब सबके लिए भी हम ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं ना, ना कि सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए होता है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो आंसर मिल जाएगा 1 और 3। वैसे थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। द ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323B कैन बी एस्टैब्लिश्ड by both parliament and state legislature is also true. Tribunals can be established by both parliament and state legislature, which उनके उनके स्टेट के दायरे में, पार्लियामेंट है सब तरफ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर है उसके दायरे में बना सकता है, और विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वहां पे पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट का बना सकता है। ये इसमें इंटरफियर नहीं, ये इसमें इंटरफियर नहीं। हाँ, फेडरलिज्म तो इसीलिए होता है ना। तो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। With reference to district judges, consider the following statements. They possess original and appellate jurisdiction in both civil and criminal cases is actually true. District judge हो या additional district court हो, they have the
original jurisdiction in both civil as well as criminal matters. उनका जो अगर स्टेट है, स्टेट में इतना जो एक डिस्ट्रिक्ट का ये है, तो ऑफ कोर्स दे हैव द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, पहले उन्हीं के पास आते हैं. दिस इज ट्रू. कमिंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, they have supervisory powers over all the subordinate courts on matters of administrative purposes. नहीं, एक्चुअली सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है हाई कोर्ट आ सकता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो सुपरिंटेंडेंस आता है. हाई कोर्ट हैज द राइट ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर एंड कंट्रोल ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. दूसरा गलत है. और थर्ड वाला, दे हैव डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर ऑल द जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट. फिर से द ये जो डिसिप्लिनरी पावर्स जो है, इसके लिए सेपरेट क्लास ऑफ कोर्ट्स है. सिर्फ मतलब वो जो सेपरेट क्लास ऑफ कोर्ट्स वो हाई कोर्ट के पास ही आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं. तो तीसरा वाला भी गलत है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे प्रोसेस द ओरिजिनल एंड एपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस is the correct option. That is only one. चलो let's go to question number 30. What is the provision to safeguard the autonomy of Supreme Court of India? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का autonomy safeguard पूछ रहा है. ऑप्शन 1, while appointing the Supreme Court judges, the president has to consult the Chief Justice of India. That is actually true. सुप्रीम कोर्ट का जो ये है, president has to consult the Chief Justice. This is true. और द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली. नहीं यार, इतना बड़ा सा प्रोसीजर होता है. 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा का मोशन बनाना पड़ता है, और दोनों को वो मोशन को एक्सेप्ट करके फिर से एक कमेटी बनाना पड़ता है, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का होता है, तो बाद में लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग के ज़्यादा इससे पास होने के बाद होता है. सिर्फ चीफ जस्टिस से रिमूव होता नहीं है. गलत है. दिस जज कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट अब बाद में रिमूव करता है. तो सेकंड वन गलत है. पहला सही है, सेकंड वन गलत है. तो आंसर यहाँ पे 1 और 3 आ जाता है. वैसे थर्ड भी देख लेते हैं. द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, which legislature does not have the right to vote. Of course, to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India, this is correct. और fourth वाला, all appointments to officers and staffs of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. नहीं, this is wrong. Actually, all the appointments of officers and staffs of the Supreme Court are made by the Chief Justice of India. ये जो स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट इनडायरेक्टली. दिस इज डन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये भी गलत है. आंसर इज 1 and 3. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31. एनएलएसए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन है. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि the first option, the objective is to provide free competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity is actually correct. So let's go to the second option. It issues guidelines for the state legal service authorities. नेशनल है, स्टेट को ऑब्वियसली गाइडलाइन फॉलो करने को बहुत पता है का ही. टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रूआउट द कंट्री, जेनरिक स्टेटमेंट है. दिस इज आल्सो करेक्ट. तो go to the third question. The decisions made by the Lok Adalat is final and binding on all the parties. This is true. Lok Adalat का decision is final and it is binding. Decree of a court ही माना जाता है उसको. So it is 1, 2 and 3. All the 3 are correct. So let's go to the 32nd question. To moving on to question number 32. लोक अदालत के बारे में है.
So the first option, Lok Adalat have the jurisdiction to settle matters at pre-litigative stage. It's true. And not those matters pending before any court is false. Actually, if anyone is planning to go to a court in pre-litigative stage can go to Lok Adalat, and if the court process is going on and still if both the dispute parties want to go to Lok Adalat, they can do that, and if they do that, then the court fees which is actually taken by both of them will be returned back to them. So A is false. The Lok Adalat deal with matter which are civil and not criminal is also false. Actually, Lok Adalat deals with both civil as well as criminal matters. And so this one is also false. Going on to the third option. Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only is false because it also consists of legal professions of other people such as advocate, such as a law officer, even a law teacher or a social worker, and most of them preferably are women. So this only is also false. And if we go to the fourth option, Legal Service Authorities Act 1987, Legal Service Authorities Act 1987 provides for the establishment of permanent Lok Adalats, which is actually true. It does. So they have been set up as permanent bodies with a chairman and two members, providing pre-litigative mechanisms and settlement of certain cases, and also relating to public utility services such as transport, postal, telegraphs, and etc. also can be given to the Lok Adalats and so on. So, chalo, let's go to question number 33. Which of the following are included in the original jurisdiction of a Supreme Court? Original jurisdiction of a Supreme Court. This is with respect to the dispute. If a dispute between a government of India and one or more states, yes, the dispute between government of India and one or more states is the original jurisdiction of a Supreme Court. And coming on to the second option, a dispute regarding elections to either House of Parliament or that of the legislature of a state. This is not the original jurisdiction of the Supreme Court, so this is false. If it is between two or more states, then that becomes the original jurisdiction of the Supreme Court, and that actually is the fourth option, the dispute between two or more states. And a dispute between a government of India and a union territory, इसका तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता क्योंकि यूनियन टेरिटरी इज ऑलमोस्ट completely governed by the government of India, or and even in case of Delhi there are strict rules, मतलब demarcations, law, land, police, and is all governed. I mean, so third is not a option. 1 and 4, option C. Let's go to question number 34. With reference to Gram Nyayalaya, which of the following statements is or are correct? It is a statutory body. Gram Nyayalaya is a statutory body. Yes. Formed by the Legal Service Authorities Act 1987. It is false. Gram Nyayalaya is formed by Gram Nyayalaya Act 2008, uh, which the Law Commission in its 114th report had suggested it. So one is false. One is false. Let's go to the second option. Gram Nyayalaya cannot hear criminal cases. Again, it's false. It can hear both civil as well as criminal cases. Civil as well as criminal cases. So that is also false. And in criminal cases, it follows the procedure for summary trials.
and it is not bound. The Grama Nyayalaya is not bound by the Criminal Procedure Code of 1908. It's the Code of Civil Procedure 1908, not criminal. The Code of Civil Procedure 1908. It is not bound by that. तो PNG से bond होता है. And coming on to the third option, the act associates local social activists as mediators is actually true. So third one is the correct option. Chalo, let's go to the 35th question. Consider the following statements with reference to Article 13 of the Indian Constitution. A constitutional amendment inconsistent with the fundamental rights is void under Article 13 is actually given in the Constitution, and it is a correct option. Or the second option, custom or usage having force of law can be declared void if it violates the fundamental rights. This is also correct. So both options are correct. It is quite simple, and this is declared by 1973, not earlier than that. So, yeah, coming on to the question number 36. The power to increase the number of judges of a Supreme Court of India is vested with the Parliament. Actually, in the original constitution, जब पहले पहले फॉर्म हुआ था, there were just 1+7, मतलब one Chief Justice of India and 7 Supreme Court judges, which actually was increased gradually, and in 2019 there was 31 judges overall, 30 plus 1, and now there are total 34 judges, that is 1 plus 33, 1 CJI and 33 senior most judges. Alright, let's go to question number 37. Which of the following are quasi-judicial bodies? Quasi-judicial body, they have some amount of judicial power in them. Competition Commission of India, CCI, that is a quasi-judicial body, correct. National Green Tribunal with respect to environment, correct. National Consumer Dispute Redressal Commission, correct. National Commission of Women is also correct. So all of the four, 1, 2, 3, 4. Come to question number 38. With reference to Telecom Regulatory Authority of India, TRAI, consider the following. So it is a statutory body. Yes, it is a statutory body which is set up under Telecom Regulatory Authority Act of 1997. Wait, it is not it is a statutory body. So, हाँ, ये सही है. तो one is, he has asked incorrect. So if this is correct, then one will not be the option. And then its function is to inspect and conduct trials for equipment in telecommunication sector. Generic statement, which is also true. 2 cannot also be the option. It makes mandatory for service providers to report the respective tariff plans, which is quite generic and true. So this is also not an issue. So the option is none of the above. And then coming on to question number 39. With reference to India, consider the following statements. Judicial custody means an accused is in the custody of concerned magistrate, which is actually true, and such accused is locked up in a police station and not in a jail, which is false. Nahin, he is locked up in a jail. A judicial custody, which is the custody of the concerned magistrate, is actually locked up in a jail, not in a police station. A person who is locked up in a police station is the one who is actually accused. So one is false. And if you let's go to the second option. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. That's actually correct. Judicial custody as in, अगर कोई बंदा अभी मजिस्ट्रेट से कुछ मतलब सजा लेके या कोई उस जेल में बंद है, मतलब प्रिजन जेल में बंद है, पुलिस के थाने में नहीं, तो अगर पुलिस को उसके साथ इंटरोगेट करना है, अगर पुलिस थाने में था तो आराम से जो मन चाहे वो ऑलमोस्ट करता है यहाँ पे. लेकिन
जब जेल में है तो वो डायरेक्टली इंट्रोगेट नहीं कर सकता. प्रिजन इज अ completely different issue. प्रिजन मतलब जेल. तो here he has to take the permission. So this is actually true. So option is B. Chalo, let's go to question number 40, which talks about anticipatory bail. What actually is anticipatory bail? Anticipatory bail is nothing but it is granted to a person in anticipation of apprehending arrest. मतलब एक प्रिवेंटेटिव रिलीफ है एंटिसिपेटरी बेल. प्रिवेंटेटिव रिलीफ. अभी कोई होने वाला है, मतलब कोई अगर इस किसी अनवांटेड तरीके से उसको अगर अरेस्ट होने वाला है तो वो एंटिसिपेटरी बेल पहले से निकाल सकता है. तो चलो लेट्स सी द ऑप्शंस. द ऑप्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ एंटिसिपेटरी और प्री अरेस्ट बेल इज लिमिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ओनली. ये जब भी ओनली आता है थोड़ा ना होना चाहिए, और इट्स एक्चुअली नॉट. द पीरियड्स कैन वेरी एट एनी पॉइंट. इतने टाइम के लिए भी एंटिसिपेटरी बेल निकाल सकते हैं और इतने टाइम के लिए भी एंटिसिपेटरी बेल निकाल सकते हैं, विच द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड. तो दिस वन इज फॉल्स. लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन. It cannot be granted after a charge sheet has been filed in a criminal case. Actually, Allahabad, UP में Allahabad High Court has actually said that it can be granted even after the charge sheet has been filed in a criminal case. But there is always a but, क्योंकि this is after the criminal case has the charge sheet. But the anticipatory bail, which can be filed, will have certain restrictions. जैसे कि आप यहाँ से वहाँ पे मतलब शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वैसे कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो restrictions डाल सकता है कोर्ट. तो that's fine. तो both are false. Let's go option number D. Question. Going on to question number 41. In Keshwananda Bharati case, Supreme Court, which is a mini constitution, Supreme Court decided that the constituent power of the parliament is limited and is subject to the basic structure of the constitution, which is true. The right to property is not a part of the basic structure of the constitution, is also true. इसी में केशवानंद भारती केस 1973, it does say that it is not a part of the basic structure, which is right to property. That is true. And also Keshwananda Bharati case says that court, it reserves it reserved the right of itself to decide which and various provisions are the basic come under basic structure and which does not. The court alone can do that. So yes, these both are true, and preamble is a part of the constitution is also decided in Keshwananda Bharati case itself. So both one two all three 1 2 3 are correct. Option C. So coming on to question number 42. So here he asks about the first option. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes her matter of right. This is actually false. Parole is not a right. Okay, इसके बारे में मैं थोड़ा explain करता हूँ. And the second, state governments have their own prisoner release on parole rules. This is actually true. Okay, actually parole and furlough, there are two things. Parole is nothing but अगर कोई सीवियर इलनेस है, सोचो कि कोई बंदा 14 ईयर्स या 20 ईयर्स तक जेल में ही रहने वाला है या 10 ईयर्स तक जेल में ही रहने वाला है और उसको सीवियर इलनेस है, सच एज ही हैज फोर्थ स्टेज कैंसर और समथिंग लाइक दैट. तो at that time he has very limited days to live, or if the prisoner behaves correctly in the cell and socially he is considered like he won't cause a nuisance in the society again, then he can be left out to the society to live his remaining days. So that's what parole is mean. But it becomes his right? No.
parole is not a matter of right. And that also parole जो रहता है, it is decided, and it is decided case by case basis. So one is wrong. Whereas with same, when we talk about parole, you can also talk about furlough. So furlough is such a concept wherein a prisoner is there and his family member is dead. So at that time, or something is happening with respect to his family, at that time he can be went. I mean, उसको ग्रांट देते हैं कि आप 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक वहां पे जाके बात करके वापस प्रेजेंट के पास आ जाना. तो इट्स यूजुअली बेसिकली हिज राइट, बट उसके भी दायरे होते हैं कि इफ ही इज सोशली और मतलब सोसाइटी में इन्वेशंस कर भी कर सकता है, तो इट कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉरलो. बट बेसिकली फॉरलो मतलब फॉरलो का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, उसको राइट के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, पैरोल को राइट के जैसे कंसिडर नहीं कर सकते. Parole is not considered as a right, whereas furlough can be considered as a right. And state governments have their own prisoners release on parole rules. जो parole है, जब कि कैंसर वगैरह अगर हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट्स का उनका सेट ऑफ रूल्स होता है. एंड द थिंग इज, prisoners act actually says that only this is important, only the states can make rules regarding the release of prisoners on furlough. फरलो के टाइम पे अगर रिलीज करना है, मतलब कोई मरा है वगैरह, तो ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स. मतलब फरलो हो, परोल हो, रिमिशन हो, सब करेक्शनल प्रोसेस ऑफ जेल रिफॉर्म्स, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन डू दैट. स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है. ओके, तो इसका तो ऑप्शन ऑप्शन बी है. चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 43. With reference to the protection provided to arrested person under Article 22 of the Constitution, arrested person under Article 22 of the Constitution, right to life के बारे में पूछ रहा है. तो let's see. A person has the right to be informed about the ground of the arrest, which is actually true. And then a person must be produced before the magistrate within a period of 48 hours is false. He should be produced before the magistrate within a period of 24 hours, excluding the holidays, of course, and the travel time. So second is false, first is true, second is false, first is true. So option is C. Let's see the other two options. Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused. Obviously, force करके भी confess कर सकते हैं. And a boy under the age of 15 years or a woman cannot be called to the police station just for the questioning, which is also true. हाँ, not just for questioning के लिए नहीं बुला सकते. And this preventive detention of Article 22 is available to both citizens as well as aliens, which is an important thing that you should consider. It's citizens or aliens, दोनों के लिए है. तो चलो, let's go to question number 44. Which of the following statement is correct about the Supreme Court's power to review under Article 137? Article 137, Supreme Court's power to review. What does it state? So it states that जो भी उसने पहले कोई डिसीजंस या जजमेंट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स बैक. तो दैट्स व्हाट ऑप्शन बी स्टेट्स. इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013 ऑल्सो स्टेट्स दैट अ रिव्यू पिटिशन, अगर कोई रिव्यू पिटिशन डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब रूल जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट को रिव्यू करना है, तो रिव्यू पिटिशन करना होता है. तो दिस रिव्यू पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड विद इन अ मैटर ऑफ 30 days फ्रॉम द जजमेंट. एंड if you see that it can Supreme Court's power under Article 137, let's see option C. It can review all the judgments and orders passed by High Court through appeal. Nahi, not through appeal. And fourth one, it can review all international laws and treaties. Nahi, nahi, nahi.
parliament which does the treaties with uh, other international treaties, and जुडिशियरी यूजुअली इंटरनल अफेयर्स को रहता है, तो इसको जुडिशियरी टच नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस एंड अनटिल इट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए करने के लिए पार्लियामेंट मानेगा भी नहीं, तो दिस इज completely different and this is completely different. And let's go to question number 45. With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India is actually true. कर सकते हैं वापस कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को वापस सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुला सकता है। हाँ, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी है। और सेकंड ऑप्शन, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज इज ऑल्सो करेक्ट। इस पावर को मतलब इस रूल को एक्चुअली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब 2010 में कुछ क्राइम हुआ था और एक जजमेंट आया था। 2021 में सेम क्राइम हुआ है और जज को पता नहीं कि कौन सा जजमेंट देना है, तो ही कैन रेफर दिस 2010 केस to give the same judgment back again in 2021. This is a court of record. इसको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 46 with reference to public interest litigation. Public interest litigation in India, it allows any citizen to approach the court in a case of violation of fundamental rights of a group of people. Yes, कि कोई group of people problem है and you are not that group of people, but still you can file a PIL, public interest litigation. Yes, that is correct. First option is correct. Coming on to the second option, a public interest litigation can be filed in both Supreme Court as well as High Court, 32 and 226. That is also correct. But हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में PIL कैन बी डन, बट अदर देन दैट लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, देयर PIL कैन नॉट बी डन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And then the third is PILs can be filed under Article 32 of the Constitution. That is correct. Fundamental rights violation हो रहा है तो jurisdiction निकलेगा with respect to Article 32 in case of Supreme Court and 226 with respect to High Court. So both three are correct. 1, 2, 3 is the correct option. Let's go to question number 47. The Constitution ensures independence of judiciary through which of the following provisions? Judiciary, executive और legislature के बारे में separation कैसे है बोल के पूछ रहा है। तो the appointment of the judges is done through a collegium system. This doesn't, yes it is, but this does not mean, I mean, constitutional provision पूछा है. The constitution ensures the independence. We need to read the question thoroughly. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनडायरेक्टली वो पूछा है, तो ये जो कोलिजियम सिस्टम है, दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वन इज गलत. इट इज मेंशन्ड इन द सेकंड एंड थर्ड जजेस केस. कोलिजियम सेकंड एंड थर्ड जजेस केस के एग्जिस्टेंस से कॉन्स्टिट्यूशन कोलिजियम सिस्टम आ गया है, तो वन इज रॉन्ग. कमिंग ऑन टू द सेकंड option, provision providing fixed tenure to the judges. Fixed tenure of judge of a Supreme Court is also not there in the Constitution, which is wrong. This is very important. Fixed tenure of judges is not there in the Constitution for pro. And then coming on to the third option, the constitutional jurisdiction and powers of the Supreme Court cannot be curtailed by the parliament. Of course it cannot be curtailed by the parliament. उसी के लिए तो बड़ा सा 1973 में उतना बड़ा सा केस हो गया था केशवानंद भारती में. तो this is actually true.
And coming on to the fourth option, generally the conduct of judges. Generally मतलब generic statement है तो usually true होता है, लेकिन देखेंगे the conduct of the judges in the discharge of their duties cannot be discussed in both the houses of the parliament. That is also true. ये पार्लियामेंट में जो होता है और कोर्ट में जो होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं जनरली इसका डिस्कशन, पार्लियामेंट का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते, और पार्लियामेंट में भी जो होता है इसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते। बोथ, दोनों के डिस्कशंस दोनों में नहीं करते हैं, तो दैट इज ट्रू। तो आंसर इज जस्ट 3 and 4। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। इन context of appointments of Supreme Court judges, consider the following statements. So it is just appointment of Supreme Court judges, and he has asked very important, which of the following are incorrect. So let's see the first one. The Chief Justice of India, the supreme body in case of judges, appoints the judges of the Supreme Court in consultation with four senior most judges of the Supreme Court, is galat. The judges are appointed by the president ना, तो ये गलत है। The Chief Justice of India is consulted by the president who appoints the judges, not the CJI himself. Though if first one is incorrect, the answer can be A, B, D. The second option, consider according to the constitution, the appointments of acting Chief Justice is made by the President. Yes, acting Chief Justice is made by the President. So 2 will not be an option. If 2 is not an option, then we are just left with B and D. Coming on to the third option. Third option. Till now, not a single person who has been distinguished as a jurist in the opinion of the President has been appointed as a judge of a Supreme Court. Factual statement है and it's actually correct. अभी तक कोई भी जो jurist है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं घोषित किया जा चुका है। दिस इज एक्चुअली दिस jurist है जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज एक्चुअली not there in case of high court. It is just there or just a requirement which can be used for Supreme Court judge. तो एंड ऑल्सो अगर कोई जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, then he could be a distinguished jurist or he must have at least 10 years of experience as an advocate in high court or 5 years of experience as a judge of a high court. 10 years as an advocate, 5 years as a judge of a high court, continuously होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, or a jurist to be appointed as a Supreme Court judge. Alright, chalo, let's go to the 49th question. And before that, the one more important fact is that only 8 persons till now सिर्फ 8 लोग हैं who are appointed as Supreme Court based on the experience of advocate of 10 years. 10 years एडवोकेट होके जो सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं वैसे सिर्फ 8 लोग हैं अब तक, जब से इंडिपेंडेंस मिला है तब तक। तो चलो, लेट्स गो टू 49th क्वेश्चन। With reference to the removal of high court judges, which is similar with respect to the Supreme Court judges, but consider the following statements. The president can issue the removal order of a judge only after the address of the state legislature has been presented to him in the session, is galat. स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए पार्लियामेंट में, स्टेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो पहला वाला तो सिंपल है, गलत। एंड द सेकंड, द कमिटी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस शुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, व्हिच इज ट्रू। यहाँ पे हाई कोर्ट जज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट to see whether this proved misbehavior or incapacity
का दायरा पड़ता है या नहीं, तो ऑप्शन इज 2. And let's go to the 50th question. With reference to the advisory jurisdiction of the Supreme Court, consider the following statements. When is this advisory jurisdiction usually brought out? This advisory jurisdiction, which comes out because of which is stated in Article 143, authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court. President to seek the opinion of the Supreme Court where in treaties before pre-independence 1947 का कोई treaties for its opinion, President can ask the Supreme Court. And कोई dispute है similarly, then President can ask the Supreme Court's opinion according to Article 143. But mind you, this opinion is non-binding. Alright, so chalo. One is this first option is actually correct. The Supreme Court must tender its opinion to the President if the dispute arises of any pre-constitution treaty. And coming on to the second option, the advice tendered by the Supreme Court with regard to the pre-constitutional treaty is binding. No, it is non-binding on the President. So you can see just option A is correct. So there goes test number 4. Well, we'll try to complete before April, March. We'll try to see that we'll complete both forum or we'll do one more test series. Your choice. Vision और वाजीराम और शंकर. आप बोलो कौन सा करना है, वो कर लेंगे. फोरम तो एक खत्म कर लेंगे, या राउज वो भी अच्छा है, कोई एक करेंगे. और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर यूपीएससी पेपर्स आल्सो सच एज CAPF and all such things. तो चलो, let's stop the discussion here.